Welcome to IT Hub. Let's start today's topic, mobile IP. In this video, we will learn about the term agent discovery. As the name suggests, here agents को find किया जाता है, agents को discover किया जाता है. There are two agents, as I mentioned in our previous video, home agent and foreign agent. Home agent present in home network and foreign agent present in foreign network. The aim of agent discovery is to know about the location of mobile node. Mobile node home location में present है और foreign location में present है. इसको find out करने के लिए agent discovery का process किया जाता है. So let's start with this slide. Method by which a mobile node determines whether it is currently connected to its home network or to the foreign network when the node has moved from one network to other network. If the mobile node plays from home network to foreign network, then the current location of mobile node is foreign network. So to know about the current location of mobile node, we will use agent discovery method. As you can see here in this flowchart, there is a mobile node and home agent. And foreign agent advertise itself so that they know about the current location of mobile node. Suppose home agent advertise कर रहा है खुद को, signals radiate कर रहा है. If the mobile node catch that signal, then the mobile node is present in home network. Similarly, foreign agent also radiate the signals. If mobile node catch that signals in that area or the signals come from foreign agent, then the mobile node present in foreign network. So to know about the current location through the foreign agent, this process is called agent discovery. Agent and foreign agent सिग्नल्स रेडिएट करेंगे, खुद को एडवर्टाइज करेंगे सो दैट द मोबाइल नोड विल कैच दैट सिग्नल. जहाँ भी मोबाइल नोड ने सिग्नल कैच किए वहाँ वो करंटली प्रेजेंट होगी. इफ नोट कैच दैट सिग्नल थ्रू होम एजेंट, देन द मोबाइल नोड प्रेजेंट इन होम एरिया. कैच दैट सिग्नल थ्रू फॉरेन एजेंट, देन इट प्रेजेंट इन फॉरेन नेटवर्क. तो नेक्स्ट स्लाइड इज रजिस्ट्रेशन. व्हेन द मोबाइल नोड प्लेस्ड इन फॉरेन नेटवर्क, तब उसको वहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा. द मोबाइल नोड इन फॉरेन नेटवर्क, तब वहाँ पे उसको रजिस्टर किया जाएगा इन द विजिटर लिस्ट ऑफ फॉरेन नेटवर्क. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑथेंटिकेट दैट मोबाइल नोड. नाउ इट्स सिक्योर टू ट्रांसफर द डेटा. फर्स्टली वी विल ऑथेंटिकेट दैट नोड, मोबाइल नोड इन फॉरेन नेटवर्क. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन. वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है उसको, मोबाइल नोड को फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रजिस्टर किया जाता है. जब तक कॉरस्पॉन्डिंग नोड पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर देता तब तक मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में रजिस्टर रहेगा. इफ द मोबाइल नोड मूव फ्रॉम फॉरेन नेटवर्क टू होम नेटवर्क, then we have to re-register the mobile node in that area. For transmitting the data packets, हमें रजिस्टर करना पड़ता है मोबाइल नोड को in that area so that we can continue the process of transmitting data packets. So let's start with this slide. First point is, when a mobile node from its home network to foreign network, to make the connection continue, the process of registration of mobile node is introduced. Registration की नीड तभी हुई जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में गई. मोबाइल नोड विच इज करंटली प्रेजेंट इन फॉरेन नेटवर्क मेक अ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टू फॉरेन एजेंट. वो मोबाइल नोड करंटली जो अभी प्रेजेंट है फॉरेन नेटवर्क में, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी टू फॉरेन एजेंट. वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी टू फॉरेन एजेंट and foreign agent send the request to home agent, and home agent verify and authenticate mobile node on the basis of some parameter. Mobile node originally home network में थी, so home agent will give the verification and authentication on the basis of some parameters, and then it will send back to foreign agent, and foreign agent will register that mobile node in their visitor list. Make a tunnel from home agent to foreign agent and temporary address or care of address generate to the mobile node. मोबाइल नोड के पास care of address generate हो जाएगा जब उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा नेटवर्क में. Mobility binding. There is a term mobility binding. Mobility binding is association of mobile node with care of address. Next point is then complete registration of mobile node in foreign network for a time period. Temporary basis पे उसका registration होता है in foreign network. After that, re-registration required. So this is the process of registration of mobile node in foreign network. So I hope registration and agent discovery is clear to you. Next video, we will learn about the tunneling process. So thanks for watching.